मैं आ गया फिर से 10 साल बाद भारत ने हर बार की तरह। भैया बहुत टाइम हो गया मैं स्ट्रीम करे हुए। भाई माँ क्या मैं भूल जाता हूँ यार भाई क्यों। कोई नहीं, मैं आ चुका हूँ फिर से 10 साल के बाद। मैं हर एक चीज में कॉपीराइट क्लेम माँ की तक कुछ नहीं है। मिस्टर ब्रेस देखा। यो 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 What? यो 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 यो। चलो भाई काम कर रहा है, आ जाओ सब आ जाओ। क्या बकवास चल रहा है। What is going on? Welcome back to the channel and ये वीडियो जो guys मैं जो है आपसे शेयर करने वाला हूँ guys related चलो देखते हैं about the new state and also guys project blood strikes related। यहाँ पे जो है guys बहुत ही ताज़ा खबर निकल के आई है, तकलीफ भरा हो जाता है। नंबर वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है, मिरामार वाले वाइब्स जो है गैस मुझे इस मैप में देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जब भी आता है इसका गेम प्ले भी आएगा एंड लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे, ठीक है। तो गैस जरूर स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गैस पैच नोट के अंदर बढ़ने से पहले जो है गैस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक्स रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है गैस प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक इट इज कमिंग, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रोविंग्स नाम का एक बंदा है जो कि गैस यहाँ पे एडमिन है नेटीज इंग्लिश ट्विटर अकाउंट हैंडल का। एंड यहाँ पे जो है गैस इसने अभी हाल ही में ट्वीट कुछ भी चला। ये कौन है? कुछ भी देखने लायक नहीं, यूट्यूब में कुछ होता ही नहीं ऐसा कुछ देखने लायक। माँ क्या नेवर। हाँ? हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। क्या बात है वाह। ओ भाई वो रहा मौत का कुआं असली में था। ये क्या आवाज है भाई? हेलो ये क्या आवाज भाई? ये भाई डर लग रहा भाई। वो रुक गए, मुझे उठा लो अब से नहीं आऊंगा भाई। मेरे को ये तो देखना है भाई। साल 2016 किससे स्टार्ट किया आज? बच गया। रोब्लॉक्स रोब्लिक्स कुछ नया चीज आया भी है। देखते हैं भाई, आ जाओ। ओहायो स्केप, ये क्या है? अरे लोड ही नहीं हो रहा है। अरे बस किया।
क्या खेल है? वेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना स्ट्रीम इवेंट्स से स्टार्ट करेंगे। तो माँ की बकचोदी होगा आपको। अरे भाई गलती से मैंने अपने कान के घन के खा लिया गलती। छी, अरे यार गलती से वही वो कर दिया। तुम्हें कब तक होगा लोड? हाँ दे बिंग ओए क्या लिखा है मैंने तो समझ नहीं यार। बच्चा खराब नहीं हो गया किया हट। ये क्या हुआ? डांस 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 नाच नाच उठो कहाँ हो? अरे कल क्या हो रहा है ये? एकदम वाह पूरा जो रुकी गया। मुंसिफा आ गई है। मैं मर गया क्या? क्या बकचोदी है? डाइट गया मर क्या है भाई? व्हाट द क्या लैग है? मेरे को पता भी नहीं क्या चल रहा है अभी। मेरा फोन कर
कुछ नहीं कर पा रहा। अरे क्या फंस गया यार। मैं आप... क्या फंस... मैं मर भी गया तो मेरा कोई गलती नहीं है। फंस गया है। क्या चल रहा है भाई? माँ की माथा खराब हो रहा है मेरा। I say, क्या करूं मैं? क्या गला है मेरा, गले का हड्डी में कुछ घुस गया है भाई। क्या बकचोदी है। हाँ, ऊपर ग्लिच ही हो गया सीन ही ग्लिच हो गया। डोन 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 डोन। गेम पागल हो गया। ओह हे ना भाई, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। मैं चलाऊंगा भी नहीं ऐसे। टेंशन नहीं लेने का। ये क्या खेलो? देखते हैं, चलो क्या क्या गेम है। क्या ये फ्री फायर मैक्स? ये क्या है? कुछ भी नहीं है मान, एकदम सब छाड़ बना है। ये क्या है? क्या? मेरा फोन कुतरिया गर्म हो रहा है एकदम। मैं इसमें लिटरल अभी खाना पका सकता हूँ। मैं अंडा पकाने का सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं तो क्या कुछ भी अच्छा नहीं है, सब टट्टी है भाई। अबे ऊपर जाना। मैं कुछ भी, अरे क्या है भाई? लूडो लूडो खेलेगा।
टेम्पल रन। तीन पट्टी, तीन पट्टी क्या है? तो क्या क्या गेम आके रखा है, मेरे को पता भी नहीं है। खोल तुझी मुंह। इसका सीजन 1 आ गया। अरे ये क्या बाबा से फोटो लगाते हैं लगवाने गधों को। अरे भाई चूत भाई, सही में दिमाग तो है इनमें, बहुत दिमाग है इनमें। रोब्लॉक्स को डिलीट ही मार देता हूँ, बेफालतू का फोन में है। मैं एकदम नहीं खेलता, मैं बिल्कुल नहीं। कौन मास्टर, जॉर्ज मास्टर, नोबल मास्टर, लेसन मास्टर। क्या 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 करूं मैं? चलो ये खेलते हैं, कुछ है नहीं, बस चल जाए। फोन भी बहुत गर्म हो रहा है। ये कौन है? हैंड ऑफलाइन हो गया, मैं आते ही मैं नहीं खेल रहा। हट पे। चलिए शुरू करती ही। लेट्स गो। एक चीज देखता हूँ मैं। हैं? ये क्या बाबा सिर है? गलत सीन है। अपना टीममेट के पास क्या क्या माँ की क्या चल रहा है भाई? इसकी आँख मैच चल रहा है। What the hell? Oh my. What?
जा 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 30। मैं नंबर 3 को फॉलो करना चाहूँगा। बहन का नोक कर रहा। ठीक है बेटा, तेरे को फॉलो कर देता हूँ। भोसड़ी वाला मेरे उससे बहुत बड़ा भोसड़ी बंदा क्या मेगा पूरा बंदे नहीं आए ना, आए तो देखो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आओ क्या मेगा पर लोड़ा। ओ परफेक्ट। ओह ओ बाय। मेरे को लगा ही अरे फिर भी हार नहीं मानने का, हार नहीं मानने का। सब खत्म तो ही ना हुआ है भाई, आगे बढ़ते रहो। रिजल्ट जय भाड़ में। तो ज़्यादा कहाँ चाहिए वैसे, अभी तक मरा नहीं है तो मैं उधर जा सकता हूँ। विशु भाई ने मार दिया, विशु भाई। अरे भाई, अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, उतर जा एक बार। कुछ दे दे, कुछ दे दे। मैं तो खत्म हूँ। क्या बवासीर चल रहा है बहन। तुमको पता नहीं मगर मेरा फोन कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है अभी। और
私のマークを確認して。 भाई नॉक कर दिया किसी तरह से। पता नहीं कैसे मार दिया मैंने। What the hell? Oh my god. आहो यही यही। और कोई तो नहीं है ना। ए भैया देखो बकचोदी हो जाएगा फिर। फोन इतना गर्म है। ओ हाथ में ना फट जाए भैया। ओ आइस पैक दो इनसे एक बार। हंसो एक बार। मारो। इतना गर्म है मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रेक में। ठीक हो गया। बहुत गर्म है सर, बहुत ठंडा फ़ोन है। अरे ये लोग भग भी गए यार, मैं इनको रिवाइव देने वाला था। मेरे पास सारे पैसे सब है। अरे ले गए रे। बेटा कल आऊँगा। फोन इतना गर्म होगा।
मार्सिस भैया मैं जिंदा हूँ, लेट्स गो। प्लीज अभी गर्म बनाना। चलो बंदे को ढूंढते हैं। Kills is needed, so let's go. एक पलटी के मना तो मुझे आते नहीं है भाई। ओ भाई, मेरा टीममेट खतरे में है तो उसको बचाना जरूरी है। गाना सुने जैसा I need help. I need help. I need help.
वाह बचा ले प्लीज। जो भी बचेगा ना वो बहुत अच्छा इंसान है। प्लीज हेल्प मी, बचा ले। ठीक है। भिंडी ABCD अभी 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 अब हालन हालन सरोड़बो
ये जूत कहाँ उतार रही है? अरे Here. come on. क्या? अरे ये अच्छा क्यों नहीं रहा? क्या बकचोदी है? वो चल गया।
Damn. कुत्ते चोर का दिमाग No. बहन वाह बहन अरे सही में चला गया ये I need help. ते क्या 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 टीममेट है भाई
Check my mark. कहा है बहन का लाइन, कुछ दिख ही नहीं रहा। उतरे साला। बिंग शिलिंग को खत्म भी कर दिया। ऐसे हवा में खत्म कर दिया। उतरिया साले, मैंने खेल रहा। हट यार, साला मूड खराब कर दिया। क्या बासिर है। Okay, all right, not bad, not okay. Hold on, wait, that wasn't bad. Huh? That wasn't bad. But it's kind of mid, though, kind of mid. Hell no.
不好意思，不好意思，你，对，明就是你我可以跟你聊聊吗？快，怎么办？怎么办？是这个？喂，这是私人场地。给我1分钟，我只想跟你讲个话。不，我没兴趣。嘿，你不要碰我，不要这种碰我。冰淇淋。好，没碰你，我没再碰你，好吧，小姐，不管你在卖什么，我都不会买。我的名字叫史凯勒·怀特优，我的老公叫华特·怀特优。冰淇淋。他全都告诉我了。真的假的？没错。रिएक्शन नहीं करता है this country than the invention of the Aryan invasion theory. केरला में भी इसी तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट्स डेवलप हुई, रेडिकल मूवमेंट्स डेवलप हुई, पीएफआई जैसी, जिनके ऊपर आतंकवाद के बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जिन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत सारे अटैक करवाए और उन अटैक्स की वजह से हाल में ही उनको बैन भी किया गया है। एक और रीजन ये हो सकता है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक इस्लामिक ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है जिस तरह नॉर्थ इंडिया के ऊपर हुआ है। तो हो सकता है कि उनको एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी का जो खतरा है वो उतनी क्लियरली नहीं समझ आया जितनी क्लियरली शायद नॉर्थ इंडियंस को समझ आया। और उसका पॉलिटिकल और कल्चरल डिसएडवांटेज आज वहां के हिंदूज को ये फेस करना पड़ रहा है कि स्पेशली केरला में उनकी पॉपुलेशन इतनी गिर गई है कि वो पॉलिटिकली काफी इररेलेवेंट हो गए हैं और जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो अक्सर एक ब्लॉक की तरफ वोट करते हैं। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की जो पॉलिटिकल डिमांड्स है वो माने जाते हैं, हिंदूज के पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं माने जाते। इसलिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें दखलंदाजी नहीं होती, लेकिन हिंदूज के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दखलंदाजी होती है। चाहे शबरीमला हो, चाहे श्री पूर्ण थ्रयीसा मंदिर हो, चाहे वेलयानी भद्रकाली मंदिर हो, चाहे कोडुंगलूर भगवती मंदिर हो, जिसके ट्रेडिशंस के साथ दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर एनिमल सैक्रिफाइस की जाती है। ये एक और धर्म है जहां पर एनिमल सैक्रिफाइस होता है, लेकिन क्योंकि वो एक ब्लॉक की तरफ वोट करते हैं उनकी एनिमल सैक्रिफाइस में दखलंदाजी नहीं की जाती। ये सिर्फ केरला में ही नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी होता आया है। तमिलनाडु के मंदिरों में भी पॉलिटिकल पार्टीज दखलंदाजी करती हैं। तमिलनाडु के प्रीस्ट्स को 60% टिकट का शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, मंदिर के पास नहीं रहता। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं उनके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं होती। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन की हालत सदर्न स्टेट्स में इस समय पर। और लगता है कि शायद फाइनली सदर्न स्टेट्स के जो हिंदूज हैं उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सीरियसली लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह बॉलीवुड की हवा धीरे धीरे चेंज हो रही है उसी तरह से लगता है सदर्न इंडिया में भी हिंदुत्व धीरे धीरे पनप रहा है। क्योंकि देखिए केरला की जो गवर्नमेंट है वो भद्रकाली मंदिर पर इसलिए एक्शन ले रही है क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में है जहां पर हिंदुत्व मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया को 2016 में बीजेपी ने जीता था और 2021 में सीपीआई और बीजेपी के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हुआ था जहां बीजेपी सिर्फ 4000 वोट से हारी थी। इनफैक्ट इस मंदिर के जो मेंबर्स हैं वो कल्लियूर पंचायत से चुने जाते हैं, जिस पंचायत को बीजेपी ने बैक टू बैक 2015 और 2020 में जीता था। और जैसा कि मैंने कहा ये जो मंदिर है ये हिंदुत्व की पावर को भी दिखाता है, क्योंकि इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मंदिर हिंदू कम्युनिटी को कास्ट बैरियर से बाहर निकल के यूनाइट होने को प्रमोट करता है। और यहाँ के हिंदू गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपने ट्रेडिशंस को छोड़ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो पुलिस उनको भगवा लगाने से रोकने की कोशिश कर रही थी उस पुलिस के पंडाल को उन्होंने भगवा कर दिया। और जब पुलिस ने इनको भगवा झंडा लगाने से रोक दिया तो वहाँ की औरतों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम सारे के सारे भगवा ब्लाउज पहन के ही आ जाते हैं, अब कैसे रोकोगे। और देखिए पुलिस और गवर्नमेंट के एक्शंस के बावजूद कितने सारे लोग भगवा लेके निकले हुए हैं। पुलिस के बोलने के बावजूद अभी तक झंडे नहीं हटाए हैं उन्होंने। So the police had given a notice in that regard, and temple authorities, the managing committee of this festival, they have not agreed for that and they went ahead with this. मतलब इस सीन को देख के तानाजी फिल्म का ये डायलॉग याद आता है मुझे। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। और बाकी स्टेट्स में भी इस तरह से हिंदुत्व की ग्रोथ हो रही है। अगर आप कर्नाटका में देखें तो वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही है। आप याद करें कि हिजाब इशू के समय पे हिंदू कम्युनिटी कितनी जोर से निकल कर आई थी और आरएसएस ने कितनी जोर से उनको सपोर्ट भी दिया था। तमिलनाडु में हाल में ही बीजेपी के एक यंग लीडर अन्नामलाई काफी फेमस हो रहे हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पर। बहुत बड़े बड़े क्राउड्स आ रहे हैं उनके रैली में और उन्होंने तो 2026 इलेक्शन के लिए काफी बोल्ड प्रेडिक्शंस भी दिए हैं। 150 is what BJP will get in 2026.
not one success. बीजेपी की ये होप है और तमिलनाडु के लोगों की ये होप है कि ये एक हिंदुत्व के बड़े लीडर इमर्ज होने वाले हैं तमिलनाडु में, उसी तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए थे और हेमंत बिश्व शर्मा असम में निकल कर आए थे। तेलंगाना को भी अगर आप देखें तो वहां पर भी लगता है बीजेपी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकल कर आ रही है। अगर आप हैदराबाद को decimated के भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। The TRS was at a comfortable 99 without even bothering to campaign much. This time, they are decimated by 44 seats. और हिंदुत्व के इस राइज को देखकर जो सो कॉल्ड सेक्युलर या फिर एंटी हिंदू पार्टीज भी हैं, उनके भी टैक्टिक्स बदल रहे हैं। द्रविडियन पार्टीज भी जाकर हिंदू महंतों से मिल रही है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी अपने आप को असली हिंदू बोल रही है। एथीस्ट कम्युनिस्ट जो हैं वो श्री कृष्ण जयंती मना रहे हैं। केरला के कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट को हिंदू फेस्टिवल्स में नहीं इंटरफियर करना चाहिए। सावरकर जी ने सही ही कहा था कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो गए उस दिन कांग्रेसी भी अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहने हुए दिखेंगे। तो अगर साउथ के हिंदूज ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो सोचते हैं कि भाई हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, अपने कल्चरल इंटरेस्ट को कैसे बचा कर रखें, तो देखिए एक ही तरीका है, आपको पॉलिटिकली यूनाइट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली यूनाइट होके ऐसी पार्टीज के लिए वोट करना शुरू करें जो आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाएंगे, अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएंगे कि हाँ भाई हमारे वोट से इलेक्शन जीते या हारे जा सकते हैं, तब सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बात मानना शुरू कर देंगी। हिंदुत्व पार्टीज को भी साउथ के हिंदूज को दिखाना जरूरी है कि भाई हाँ हम आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस्लामिस्ट से, हम आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कम्युनिस्ट से और ऐसे किसी भी लोगों से जो आपके साथ दादागिरी करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ हम आपके स्टेट्स में डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ हम आपके ऊपर कोई नॉर्दर्न कल्चर इंपोज नहीं करना चाहते, ना कोई हिंदी इंपोजिशन करना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व पार्टीज भी इस तरह की गारंटी साउथ के हिंदूज को दे पाएंगी तो हो सकता है कि साउथ के हिंदूज और हिंदुत्व पार्टी साथ में मिलकर सदर्न स्टेट्स में फिर से हिंदू कल्चर का राइज कर सके और हिंदुत्व को डेवलप कर सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सदर्न स्टेट्स में हिंदुत्व की डेवलप मेरे अकॉर्डिंग तो ये बकचोदी नहीं करना चाहिए कि हिंदी बोलना पड़ेगा, ये इंग्लिश नहीं भाई। मेरे अकॉर्डिंग संस्कृत को एकदम ही बेसिक लैंग्वेज बना देना चाहिए कि हाँ हर कोई प्योर एकदम शुद्ध संस्कृत में बात कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। खत्म मजा आ जाएंगे, मतलब कोई से उसका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि ये परफेक्ट है भाई। ऐसा नहीं कि अपना भाषा में बात ही मत करो, मगर हाँ संस्कृत को थोड़ा वो कर देना चाहिए, नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि हाँ हर कोई संस्कृत में बात कर सकता है, हर कोई संस्कृत के श्लोकों को समझ सकता है। तो संस्कृत कैसे हो सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक, एक थम्स अप जरूर दें। नीचे कमेंट सेक्शन में खूब गालियां भी दबाकर जरूर दें, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च शो के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके शाम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर भी बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब कुछ अलग दिखता है। Token. Where's that at? Where's that prime token at? Nah. आपकी बहन Vata, Pitta and Kapha. Yes, it's pronounced Pha, not Fa. These are perhaps the most popular words of Ayurveda. Despite their popularity, very few people actually know what these words mean. In this video, we are going to take a look at the real meaning of Vata, Pitta and Kapha with the help of shlokas from one of the main Ayurvedic textbooks, Ashtanga Hridayam. The Sanskrit channel is an effort to explore a vast variety of topics from original Sanskrit literature. If you wish to support this effort, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality, length and number of topics covered in our videos. Do check out all the links in the description below. Getting back into the topic, if you have some interest in Ayurveda, you would definitely have heard of the terms Vata, Pitta and Kapha. Before we attempt to understand these words, the first word we need to understand. You would definitely have heard of the terms Vata, Pitta and Kapha.
क्या Before है? we attempt to understand these भाई मेरे को words, the पता first नहीं। word we need to understand सही is में। prapancha. चलो that's- Even though the popular prapancha is world, prapancha is that which is made up of 5 elements. Everything that is manifest in this universe is made up of these 5 elements called Pancha Mahabhutas. Wind and space. Now this does not mean everything is literally धरती को made कौन- up of a lump of कौन- earth, a mug of water and so on. It is the qualities of these elements that exist in everything that is manifest. The Sanskrit words for these elements are Bhumihi, Apaha, Agnihi, Vayuhu and Akashaha. Bhumihi or earth represents the properties of mass and inertia. Apa or water denotes fluidity. Agni or fire represents heat and warmth. Vayuhu or wind represents instability and movement. And finally, Akashaha or space represents just that, the property of occupying some space. Everything that is manifest is said to have these elements and their properties in various proportions. And of course, human body too is comprised of these elements which interact with each other to perform various bodily functions. And now comes the concept of Vata, Pitta and Kapha. When the earth element in the body, mainly contributed by the solid food that we consume, interacts with the water element in the body, which comes from the water we drink, the properties of both these elements interact to form Kapha. The resultant properties of Kapha are mentioned in the 12th shloka of the first chapter of Ashtanga Hridayam. Snigdhaha, Sheetaha, Gurur Mandaha, Shlakshnaha, Mritsnaha, Sthiraha, Kaphaha. This means the properties of the resultant Kapha element are as follows. It is oily, cold, heavy, viscous, smooth, slimy and immobile. When the water element in the body interacts with the fire element, which is the bodily heat, the properties of both these elements interact to form Pitta. The resultant properties of Pitta are mentioned in the 11th shloka as follows. Pittam sasneha tikshnoshnam laghu visram saram dravam. This means the properties of the resultant Pitta element are it's oily, absorbent, hot, light, odorous, fluid and mobile. And finally, when the air element in the body or Vayuhu interacts absorbent, hot, light, sasneha tikshnoshnam laghu visram saram dravam. This means the properties of the resultant Pitta element are it's oily, absorbent, hot, light, odorous, fluid and mobile. And finally, when the air element in the body or Vayuhu interacts with the Akasha or space, the resultant property is Vata. 10th shloka of the first chapter of Ashtanga Hridayam describes Vata properties as Tatra Ruksho Laghu Sheetaha Kharaha Sukshmaha Chalaha Anilaha. This means the properties of Vata are as follows. It is dry, light, cold, rough, subtle and mobile. All these three mixtures have specific tasks to perform in the human body. Ayurveda defines health as a result of the balance among these three mixtures or doshas. Dominance or weakness of any one dosha over the rest leads to an imbalance which manifests itself as disease. What is most interesting to note is that the science of yoga and Ayurveda approach health as wholesomeness and balance. Right from genetic factors starting at birth to various food habits and climatic conditions, various factors affect this balance of Vata, Pitta and Kapha. When the Vata element and its properties are more dominant than Pitta and Kapha, the body is generally cold, dry and light. The body generally feels restless and active. This Vata dominance is not just at the level of the body, its properties can also manifest in the mind as irregular thinking and excessive and fast speech. People with excessive Vata tendencies are light sleepers with excessive dreams. When the Pitta element and its properties are more dominant than Vata and Kapha, the body is generally warm. The people with the Pitta imbalance tend to have oily skin and hair, and also they tend to sweat more than others. They are also prone to hair fall and pronounced aging symptoms.
When the kapha element and its properties are more dominant than vata and pitta, the body feels a little more heavy and inert. People with a kapha imbalance generally put on weight easily and have a sound sleep. Simply put, when one of the properties is more dominant than the others in the body, its attributes manifest themselves in a more prominent way in every walk of life. One can also extrapolate this to determine the properties of a body which has two doshas more dominant than the third. What is important to note is that this vata, pitta or kapha imbalance need not be a fixed thing in one's life. One can make use of various Ayurvedic herbs, lifestyle and yogic practices to bring balance to these elements and keep the body at utmost ease and free from disease. The level of insight these ancient Ayurvedic texts offer into the human mechanism are unparalleled even today. It is time we identify, learn, apply and cherish them instead of insulting them as fringe or pseudosciences only to realize our mistakes after millennia and repackage them. I hope you enjoyed watching this video. If you wish to support the production of more videos like these, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality, length and number of topics covered in our videos. Consider subscribing to the Sanskrit channel where we explore hidden gems in the vast world of diverse Sanskrit literature. See you in the next video. Namaskaram. ये देखता है मूलाधार Shlokas 4 चक्र. to 13 of Shat Chakra Nirupanam describe the Mooladhara Chakra in exquisite detail. They also describe the gods and goddesses corresponding to this energy junction, how to activate it, and the benefits of activating it. In this video, let's explore. The Sanskrit channel is an effort to explore a vast variety of topics from original Sanskrit literature. If you wish to support this effort, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality. Do check out all the links in the description below. Mooladhara is the root chakra, which is the most basic of the 7 major chakras. This is the entry point for a spiritual seeker for reproduction. Working on Mooladhara is key to exploring human potential beyond the normal survival process. It is like gaining super user access to the human system. Firstly, let us look at the benefits of working on Mooladhara chakra. Shloka 13 of Shat Chakra Nirupanam says, Dhyatvaitan Moola Chakranta Ravivara Lasat Koti Surya Prakasham Vacham Isho Narendra Sabhavati Sahasa Sarva Vidya Vinodi Arogyam Tasya Nityam Niravadhicha Mahananda Chittantaratma Vakyai Kavya Prabandhai Sakala Suragurun Sevate Shuddha Shilaha. This shloka says, one who meditates on Mooladhara, which shines with the brightness of 10 million suns, Koti Surya Prakashaha, gets absolute control over speech or vak. One enjoys the fruits of all this knowledge, Sarva Vidya Vinodi, and is forever full of health, Arogyam. One experiences extreme pleasantness, Mahananda, and becomes pure within, Shuddha Shilaha. One also gains capability of worshipping all the gods and gurus with beautiful words of poetry, thereby attaining the fruits of that sadhana. Now that we know the effects of working on the Mooladhara chakra and hopefully are motivated to learn more about it, let's look at the shlokas which describe this chakra. Shloka 4 says, Athadhara Padmam Sushumnakhya Lagnam Dhvajadho Gudordhvam Chatushona Patram Adho Vaktramudyat Suvarnabha Varnaihi Vakaradi Santair Yutam Veda Varnaihi. This shloka says, let's now look at the Adhara Padma or the supporting lotus which is at the base of Sushumna. It describes the Mooladhara chakra to be located below the genital organ, Dhvaja Adhaha, and above the anal outlet, Gudordhvam. It is described as having 4 petals, Chatushona Patram, which are associated with 4 sounds or varnas. These are Vam. 4 sounds are said to be shining with a golden light or Suvarnabha,
and are key to activating this chakra. The fifth shloka says, Amushmin dharayas chatushkorna chakram samudbhasi shulashtakairavrutam tat lasat pitavarnam tadit komalangam tadante samaste dharaya swabijam. This chakra is associated with the bija mantra or the seed sound of earth, dhara. This sound is lam. This sound is said to be shining in the middle in yellow color or pitavarnam with the brilliance of a lightning, tadit. This chakra is also surrounded by 8 spears or shulas which depict the 8 directions. The energy at each chakra has a governing god and a goddess. The next 2 shlokas describe their forms. These forms are extremely symbolic and are representative of the type of energy and the benefits associated with energizing this chakra. But at the same time, imagining these forms in the mind and meditating upon them work at a physiological level too to activate the corresponding energies at this chakra. I'll make a different video elaborating upon the symbolism and the significance of deities. For now, let's look at the 6th shloka. Chaturbahu bhusham gajendradhirudham tadanke naveenarka tulya prakashaha shishuhu srishtikari lasadveda bahuhu mukhambhoj, which has 4 petals and is associated with the bija mantra lam, is in turn riding upon a king of elephants, Airavata. This creature is said to be the vehicle of Indra, lord of the Indriyas or senses. Interestingly, the bija mantra of this lotus lies a newborn creator, Shishuhu Srishtikari. This is seen as a child form of Lord Brahma, with 4 shining arms and with the wealth of all the 4 Vedas at the tip of his tongue. The 7th goes as follows. Vased atra devi chadakinya bhikya lasad veda bahujvala raktanetra samanoditaneka surya prakasha prakasham vahanti sada shuddha buddhehe. Here dwells the feminine energy who is represented by the name Dakini. Her 4 arms shine with beauty and her eyes are a brilliant red. She shines with the brightness of many suns rising at once. She is the carrier of the revelation of the ever pure intelligence, Shuddha Buddhihi. The 8th shloka describes the various other components inside Mooladhara Chakra. Vajrakhya Vaktradeshe Vilasati Satatam Karnika Madhya Samstham Konam Tat Traipurakyam Tadidiva Vilasat Komalam Kamarupam Kandarpo Nama Vayuhu Nivasati Satatam Tasya Madhye Samantat Jivesho Bandhujiva Prakaramabhihasan Koti Surya Prakashaha. Near the mouth of the nadi called Vajra shines the beautifully luminous and soft lightning-like triangle which is known by words like Kamarupa or Traipura. Within this moves that aspect of Vayu or wind called Kandarpa, who is of a deeper red than the Bandhujiva flower. This aspect of the wind is extremely bright and is a supporter of life in the body. Shloka 9 says, Tanmadhye lingarupi dhruta kanaka kala komala paschimāsyaha jnana dhyana prakashaha prathama kisalaya kara rupa swayambhu vidyut purnendu bimba prakara kara chaya snigdha santana hasi kashi vasi vilasi vilasati sarida varta rupa prakaraha. Inside the triangle mentioned in the above shloka is Swayambhu Shiva in his linga form, beautiful like molten gold. This linga is facing downwards and is revealed by knowledge, jnana, and meditation, dhyana. This linga is of the shape and color of a newborn leaf. His beauty is like that of a full moon filled with lightning. This form of Shiva, who resides in Kashi, also resides here in the Mooladhara Chakra like a swirling whirlpool of energy. Shloka 10 describes the dormant Kundalini energy that resides as a snake around this Shivalinga. Tasyordhve bisatantu sodara lasat sukshma jaganmohini brahmadvara mukham mukhena madhuram sanchadayanti swayam
शङ्खावर्तनिभा नवीनचपला माला विलासास्पदा सुप्ता सर्पसमा शिवोपरिलसत् सार्धत्रिवृत्ताकृतिः. Over this Shivalinga shines the sleeping Kundalini. Fine as the fiber of the lotus stalk, she attracts the entire world and covers the Brahmadwaram with her own mouth. Like the spiral of a conch shell, her shining snake-like form is coiled 3.5 times around Shivalinga, and her brightness is as that of a strong flash of young lightning. The next shloka describes the properties of this Kundalini energy as follows. Kujanti kula kundali cha madhuram mattali mala sphutam vacha komala kavya bandha rachana bhedati bheda kramaihi shvasochvasa vibhanjanena jagatam jivo yaya dharyate sa moolambuja vilasati prodhama deeptavalihi. Her sweet voice or reverberation is like that of a far-away sound of a swarm of love-mad bees. She is the inspiration that drives a variety of beautiful arts, poetry, and literature. It is she who maintains all beings of the world by creating the duality of inhalation and exhalation, Shvasa and Uchvasa, and she shines in the cave of the root lotus like a series of brilliant lamps. Finally, the 12th shloka praises the glory of Shakti, the divine feminine energy, who is the ultimate driving force behind these sub-manifestations. It says, Tanmadhye parama kalati kushala sukshmati sukshma para nityananda paramparati vigalat piyusha dharadhara brahmandadi katahameva sakalam yad bhasaya bhasate Seyam Shri Parameshwari Vijayate Nitya Prabodhodaya. Within this Kundalini reigns the ultimate energy, who is extremely subtle. She is extremely well versed in all creation and is eternally blissful. She is the source of a continuous stream of nectar which flows in the form of eternal bliss. The radiance of this goddess, called Shri Parameshwari, the consort of Shiva, is the source of brightness in the entire universe. Meditating upon the above mentioned Bija mantras, the root sounds, and the Devi Devatas, the associated gods and goddesses, is seen as an effective way of stirring up the dormant Kundalini energy at the Mooladhara Chakra. In summary, we have seen that the Mooladhara Chakra, which bestows the seeker with powers of health, knowledge, speech, and bliss, has 4 petals in it. These 4 petals are activated by the sounds Vam, Sham, Sham, and Sam in a clockwise order. The root sound or the Bija mantra of Mooladhara Chakra is Lam, which is the same sound as that of the Lord of the Senses, Indra. The presiding masculine and feminine energies of Mooladhara are the child form of Brahma and Dakini. Mooladhara Chakra is also the abode of a downwards facing Shivalinga, on top of whom lies the snake-like Kundalini energy coiled 3.5 times. This Kundalini energy has the reverberation like that of a distant swarm of bees and is the energy responsible for all activity of life on the planet, including inhalation and exhalation. The main energy that powers up all these happenings is that of Shri Parameshwari, or the cosmic energy who is seen as the divine mother and consort of Shiva, who is the father or the emptiness of space. Now, let me chant all the shlokas related to the Mooladhara Chakra in that particular order. Did you notice that the first 4 shlokas that describe Mooladhara Chakra are in the exact same poetic meter or chandas as the Nirvana Shatakam and also the Guru Ashtakam? Both of these have been explored in this channel in different playlists. You can find links to them here. This poetic meter is called as Balaka in Sanskrit because it resembles the flight of a crane. The 12 syllables of each line, split into 4 groups of 3 syllables each, is pronounced like this: na 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 na. This tune is seen in Guru Ashtakam, or also like this: na 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 na. This tune is seen in Nirvana Shatakam. The 4 shlokas in Shatchakra Nirupanam, which describe the properties of Mooladhara, are also in the exact same meter. Let me show you how these tunes can be applied to these shlokas as well. Athadhara padmam sushumnakhya lagnam dvajadho gudordhvam
चतुष्षोणपत्रम् अधोवक्त्रमुद्यत् सुवर्णाभवर्णैः वकारादिशान्तैर्युतं वेदवर्णैः. Or it can also be chanted in this tune. अथाधारपद्मं सुषुम्नाख्यलग्नं ध्वजाधो गुदोर्ध्वं चतुष्षोणपत्रम् अधोवक्त्रमुद्यत् सुवर्णाभवर्णैः वकारादिशान्तैर्युतं वेदवर्णैः. In this video, I'm just going to recite these verses and not chant them in tune. These are intended as a support for you guys to learn the words properly with their meanings at the back of the mind. Chanting these verses regularly, being conscious of their meaning, and meditating on the associated forms is one of the many ways prescribed to activate Mooladhara. Athadhara padmam sushumnakhya lagnam dhvajadho gudordhvam chatushona patram adho vaktra mudyat suvarnabha varnaihi vakaradi santair-yutam veda varnaihi. Amushmin dharayas chatushkona chakram samudbhasi shulashtakairavrutam tat lasat pita varnam tadit komalangam तदन्ते समास्ते धरायाः स्वबीजं चतुर्बाहुभूषं गजेन्द्राधिरूढं तदङ्के नवीनार्कतुल्यप्रकाशः शिशुः सृष्टिकारी लसद्वेदबाहुः मुखाम्भोजलक्ष्मीश्चतुर्भागभेदः वसेद् अत्र देवी च डाकिन्यभिख्या लसद्वेदबाहूज्वला रक्तनेत्रा समानोदितानेकसूर्यप्रकाशा प्रकाशं वहन्ति सदा शुद्धबुद्धेः वज्राख्या वक्त्रदेशे विलसति सततं कर्णिका मध्यसंस्थं कोणं तत् त्रैपुराख्यं तडिदिव विलसत् कोमलं कामरूपं कन्दर्पो नाम वायुः निवसति सततं तस्य मध्ये समन्तात् जीवेशो बन्धुजीव प्रकरमभिहसन् कोटिसूर्यप्रकाशः तन्मध्ये लिंगरूपी द्रुतकनककला कोमल पश्चिम अस्यः ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथमकिसलयाकाररूपः स्वयंभुः विद्युत्पूर्णेन्दुबिम्बप्रकरकरचयस्निग्धसन्तानहासी काशीवासी विलासी विलसति सरिदावर्तरूपप्रकारः तस्योर्ध्वे विसतन्तु सोदरलसत् सूक्ष्मा जगन्मोहिनी ब्रह्मद्वारमुखं मुखेन मधुरं सञ्छादयन्ती स्वयं शङ्खावर्तनिभा नवीनचपला माला विलासास्पदा सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि लसत् सार्धत्रिवृत्ताकृतिः कूजन्ती कुलकुण्डली च मधुरं मत्तालिमालास्फुटं वाचः कोमलकाव्यबन्धरचना भेदातिभेदक्रमैः श्वासोच्छ्वासविभञ्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते सा मूलाम्बुजगह्वरे विलसति प्रोद्धामदीप तावलिः तन्मध्ये परमा कलातिकुशला सूक्ष्मातिसूक्ष्मापरा नित्यानन्दपरम्परातिविगलत् पीयूषधाराधरा
ब्रह्माण्डादिकटाहमेव सकलं यद्भासया भासते सेयं श्री परमेश्वरी विजयते नित्यप्रबोधोदया ध्यात्वैतन्मूलचक्रान्त रविवरलसत् कोटिसूर्यप्रकाशां वाचाम् ईशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सर्वविद्याविनोदी आरोग्यं तस्य नित्यं निरवधि च महानन्दचित्तान्तरात्मा वाक्यैः काव्यप्रबन्धैः सकलसुरगुरून् सेवते शुद्धशीलः. I hope you enjoyed watching this video. If you wish to support the production of more videos like these, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. You can also check out all the links in the description below. Consider subscribing to the Sanskrit channel, where we explore hidden gems in the vast world of diverse Sanskrit literature. See you in the next video. Namaskaram. In our previous videos on Ayurveda, I have been telling you how Acharya Charaka takes a scientific look at the consumption of alcohol. We saw how he lists down various positive as well as negative effects of alcohol. After all these cautionary warnings, it is time to reveal the secret tips within Charaka Samhita, which suggest preparatory steps that one can follow before drinking and avoid the negative effects of alcohol on the human body. The Sanskrit channel is an effort to explore a vast variety of topics from original Sanskrit literature. If you wish to support this effort, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality, length and number of topics covered in our videos. Do check out all the links in the description below. Ayurveda is a subjective science. We saw how it identifies different body types called Vata, Pitta and Kapha in a different video. If you haven't watched it yet, you can find a link to it here. The shlokas that we are going to look at now require that you understand the concepts behind Vata, Pitta and Kapha first. Do check out that link. Shloka 21 of Madhyakeya goes as follows. Abhyangotsadana snana vaso dhupanulepanaihi snigdhoshnair bhavitaschannair vartiko madhyamachare. This means a person with Vata tendencies should consume alcohol after Abhyanga Utsadana Snana, a head bath done after applying castor, sesame or coconut oils. One should prepare oneself by consuming hot and unctuous food. Unctuous food is that which is high in oil, fats and cream. 22nd shloka says, Shitopacharair vividhair madhura snigdha shitalair paitiko bhavitas channaihi piban madhyam nasidati. This means a person with pitta tendencies should cool their bodies down, eat sweet, oily and cold foods before consuming alcohol. 23rd shloka says, Upacharaira shishira dhanvajair mamsaihi madhyam marichikai saha. A person with kapha tendencies should prepare by heating up the body with exercise with foods like before consuming alcohol. On a closer look, one can clearly see that there is also a mention of what type of alcohol is best suited for each specific type of hitam madhyam prayo gaudika paishtikam kapha pittadhikebhyastu mardvikam madhavam chayat. This means for those of Vata constitution, whereas for people with Kapha and Pitta tendencies, wine made of grapes, fruits and does not mean that Acharya Charaka gives us the license to drink like fishes. The next shloka exercises caution again, saying, Vidhir vasumatam esha matraya hitam. In this shloka, Acharya Charaka says, one should only indulge in drinking after taking the right preparatory steps. If you wish to support the production of more videos like these, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution where we
explore hidden gems in the vast world of diverse Sanskrit literature. See you in the next video. Namaskaram. I'm sure all of you have heard the word chakra. It's all trash. There might be some of you for whom they are an experiential reality, while some may be lost in hallucinations. In this video, let's look at the scientific basis for the existence of chakras and how their existence makes logical sense even if they are not physically visible like other body organs. The Sanskrit channel is a project to explore a vast variety of original Sanskrit literature. If you wish to support, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality. The links in the description below. In this video, let's move from what we know towards what we do not know. Jnatat Ajnatam Prati, as it's called in Sanskrit. We know that in a human body, warmth represents life. If life moves out, the body gets cold. So what is the source of this warmth, the source of life? Is it the food we eat, the water we consume, or is it actually the air we breathe? Is literally what sustains life or prana in the body. Now, let's pay closer attention to this air we breathe. The single most important process that keeps us alive. Hold your nose for 2 minutes and poof, lights out. Such a crucial function happening almost unnoticed, even fainter than a heartbeat. The air we breathe goes in through 2 channels in our nose, the right and the left nostrils. This right-left division is not just at the level of the nose, it is also at the level of the lungs, the right half and the left half, and at the level of our brain, and also at the level seems to be a combination of 2 halves. Have you ever wondered why this particular left-right symmetry? Why are our bodies not just an asymmetric blob like an amoeba perhaps? This right-left is not just a physical demarcation. This duality is in fact much more profound. Each one of us is differently capable of employing our right and left halves. Some of us are right-handed, some of us are left. Some are more intuitive and artistic, while some are more logical. Despite all this differentiation between the right and the left, what you consider as yourself is independent of this duality. If God forbid you lose your right or left limb, your sense of I, called ahankara, is still going to remain the same. So there are 2 halves of the physical existence, and there is a non-physical sense of existence within you. We also know that not every part of the body is at the same level of sensitivity. Not all of them are at the same level of warmth. Pit of the throat, under the armpits, palms of your hand are significantly warmer, let's say, than your earlobes, your knees or elbows. So, the prana that goes in is going in as 2 halves and is concentrated more at few parts of the body than the warmth that it causes, but the presence is felt. Even if the air we breathe physically stops at lungs, its essence is carried throughout the body. This is the invisible power circuit that powers up all the body organs. While the flesh, blood and bone structure is physically manifest and can be seen growing and reducing in the body, the life force is at a subtler level of existence and can only be felt. However, we can increase and decrease the intensity of both the breath and correspondingly the warmth of the body, either by physical activity or other yogic means. The breath is not completely involuntary. If we wish to, we can bring it under our control. These spots where warmth can be felt strongest, where prana or the life force gathers and redistributes across the body, are called as chakras. Cha represents chalana or movement, and kra represents karoti or doing. Chakra is something that enables movement. It is also the name given to a wheel for the exact same reason. There are 7 major chakras, 100 plus minor chakras, and many more smaller ones throughout the body. Let's make sure that we are on the same page so far, because here is where it gets interesting. I have spoken about the significance of spine and Kundalini in a different video. Make sure you watch it if what I'm going to say doesn't make sense to you. You can find the link here.
If we look at the cross section of the spine, we clearly see two parallel tubes running on each side. Modern day scientists understand these channels as a housing for nerve bundles that carry information across from the brain to various body organs. The yogic science sees these pipes as the channels or nadis that carry the life force across the body. The left channel is called as Ida and the right channel is called as Pingala. What the yogic science also recognizes is a third channel, the one different from the dualities of left and right. This middle channel is spiritually very significant to cross the dualities of physical existence. This nadi is called as Sushumna. The name itself suggests that this is in a state of Sushupti or dormancy. The objective of yoga is to energize Sushumna using the prana brought into the body through Ida and Pingala. It is when we start to energize Sushumna that the 7 major chakras along the spine start getting activated. There are many ways of doing this, but the most efficient and direct method of activation is through Kriya Yoga, which employs almost forceful breathing techniques to channel prana in the desired direction. As these 7 chakras start getting activated, various capabilities which seem almost superhuman start becoming a reality. These have been clearly listed down in ancient Sanskrit works on Tantra. I must tell you that there are also cautionary warnings that if not handled properly, activating these energy centers might lead to an imbalance in prana, which is really hard to rectify. So, I'd suggest you use these videos only as a source of information and inspiration. These are not intended to serve as tutorials on how to activate your chakras. In our next video, we will look at the exact names, locations, and abilities associated with each chakra. I hope you enjoyed this video. If you wish to support the production of more videos like these, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution, all through the links in the description below. Consider subscribing to the Sanskrit channel, where we explore hidden gems in the vast world. तो उसने टोकन नंबर डाला, उसका नंबर आया, तो वो शुद्ध This is the Darwaza gas. Yogi. مرحبا. If we look through different lists of the Hi. Hi. Where are you from? I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. The word Rava in Sanskrit means sound. Bhairava is that which is beyond sound. Vijnana Bhairava Tantra is so named because it is a tantra, which is a set of techniques. In this case, 112 such techniques. The purpose of which is to gain knowledge or Vijnana of the nature of what is beyond sound, Bhairava. In this video, let's do an in-depth exploration of Vijnana Bhairava Tantra, a compilation of 162 beautiful shlokas which capture a conversation
between Lord Shiva and Devi Parvati. The Sanskrit channel is an effort to explore a vast variety of topics from original Sanskrit literature. If you wish to support this effort, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us create more of these videos more frequently on more number of topics. Do check out all the links in the description below. Devi Parvati once asked Lord Shiva, Kim Rupam Tattvato Deva Shabda Rashi Kalamayam. O Lord, what is the nature of your true form, which is manifest as sound, Shabda, forms, Rashi, and attributes, Kala. Paraparayah Sakalam, Aparayascha Vapunaha. Is it constantly changing and transforming, or is it unchanging and transcendental? Lord Shiva, in response, tells her that his true nature is not sound or Rava. It is in fact beyond sound or Bhairava. He then goes on to give her 112 methods in which she can know this as an experiential reality within her own self. These 112 methods seem extremely simple at a first look, but they hold deepest secrets of yoga within them. These practices are most fruitful when practiced under the guidance of a capable guru. It is also important to note the context in which these methods were delivered. This kind of a transmission can happen only when there is utmost intimacy and trust between the provider and the receiver. That is why the narration is set in the background of an intimate conversation between Devi Parvati and Lord Shiva. These practices can be quite impractical if they are just read as an intellectual exercise. They can, however, be the gateway to profound realization if practiced under the right situations and the right kind of approach. This is one of the main reasons why many gurus, while mentioning the 112 ways, never really teach them fully except in intimate gatherings. For a general understanding of how these techniques are, we can look at them as multiple categories. Out of these 112 methods, 9 are centered around the breath. Among these are the technique Yogi Samatva Vijnana Samudgamana Bhajanam. This means by balancing the inhalation and exhalation, both outside attains equilibrium. 11 methods are centered around the utterance of syllables and sounds. These fall under the science of mantra yoga. Among these are shlokas like shloka 39, which says, Pranavadi samucharat plutante shunya bhavanat shunyaya paraya shaktya shunyatameti bhairavi. This means by repeated chant of the pranava, the sound which is a combination of the syllables a, u and making it long and drawn out, and by focusing on the silence at the end, one experiences the transcendental void. 22 methods work with one's desires and feelings. These are the ones like shloka 74, which says, Yatra yatra manas tushtir manas tatraiva dharayet tatra tatra parananda swarupam sampravartate. This means wherever the mind feels fully content, that is where it should be focused upon. There alone the nature of supreme bliss manifests. 12 methods make use of focus or concentration, which is what is generally referred to as meditation today. There are 3 ways of relaxation and easing oneself into an experiential state. 7 techniques make use of the practice of focused looking. Among these are techniques like shloka 84, which says, Akasham vimalam pashyan kritva drishtim nirantaram stabdhatma tatkshanat devi bhairavam vapurapnuyat. This means by fixing uninterrupted gaze at a clear sky with steady, unwavering attention, one becomes the very embodiment of Bhairava. 10 methods mention the visualization of light. 5 methods make use of sudden cessation of activity. 12 methods make use of the all-pervasive nature of the universe. 11 methods make use of rational thought to identify the true self. 7 techniques emphasize being one with the consciousness, and 3 methods deal with the emptiness or the void of the universe. Among the last are techniques like shloka 87, which says,
एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरं तैमिरं भावयन् रूपं भैरवं रूपमेष्यति. This means in a darkest night of the new moon, by contemplating on the darkness and the void of existence, a sadhaka attains the nature of Bhairava. Vijnana Bhairava Tantra also gives instructions on how to use sexual intercourse and the energy that propels sexual desire as a stepping stone towards profound meditative states. But as I said before, all of this study, while it satisfies our curiosity, doesn't take us towards any state of experience unless handled properly under right care and guidance. I hope this video gave you a deeper insight into Vijnana Bhairava Tantra. I'll attach links for further reading on this topic in the description below. If you wish to subscribe, मेरी दादी कहा करती थी, बेटा साधु संत बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक तो वे तुम्हें लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे या फिर उन्हें भगवान की लीला समझाते हुए, और अहंकार साधु। मेरी दादी कहा करती थी, बेटा साधु संत बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक तो वे तुम्हें लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे या फिर उन्हें भगवान की लीला समझाते हुए, और अहंकार साधु संतों में अहंकार नहीं होता बेटा, साधु संत बड़े विनम्र लोग होते हैं। आई विश मेरी दादी आज जिंदा होती तो मैं उन्हें ये वीडियो दिखाता। அதாவது வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து இவ்வளோ அக்கறையோடு இருக்கும்போது கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பின்னாடி அதனால முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாமே। So there is this BBC रिपोर्टर जो जग्गी वासुदेव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने आश्रम का कंस्ट्रक्शन करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं ली थी। जग्गी वासुदेव के पास इसका कोई जवाब नहीं है। So he does this. Enough, please.
இல்ல ஈஷாவோட இதுலயே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு. இத பத்தி உங்களோட கருத்து? एंड क्लियरली मेरी दादी गलत थी कि साधु संत विनम्र होते, बट ऐसे एलिगेशंस किसी साधु संत पर सूट नहीं करते. और अचंभे की बात तो ये है कि ये साधु महंगी महंगी बाइक चलाता है, महंगे महंगे कार चलाता है, नेम इट, दिन में 6 बार कपड़े बदलता है, महंगी महंगी घड़ियां पहनता है, दुनिया घूमता है, हॉलीवुड स्टार्स से मिलता है. ये साधु आज करोड़ों में खेल रहा है और इसके इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसके करोड़ों. और आप सोचने लगते हो कैसे कैसे सदगुरु एक लग्जरी, करोड़ों भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस वे उसे वन वे और अनदर फंड भी करते हैं. दुनिया उनके टीचिंग्स को अप्रिशिएट करती है, इंक्लूडिंग बिग सेलिब्रिटीज. कैसे एक व्यक्ति कहता है भगवान की संकल्पना इंसानों ने बनाई है, असल में क्रिएशन शून्यता से आई है और वो शून्यता मैं हूँ. और करोड़ों लोग उस व्यक्ति की इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं. लेकिन मैं जग्गी वासुदेव के स्पिरिचुअल बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जग्गी वासुदेव और कमाए, हु केयर्स. मैं इंटरेस्टेड हूँ जग्गी वासुदेव की एनलाइटनमेंट वाली कहानी में. आई वांटेड टू नो कि उनके एनलाइटनमेंट की कहानी सच है या फिर अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बनाने का जरिया. एंड यू नो व्हाट, आई थिंक इट इज. जग्गी जी अपनी किताब में लिखते हैं, एक दोपहर वे चामुंडील के एक पत्थर पर बैठे हुए थे. उनकी आंखें खुली थी पर अचानक उनके साथ कुछ तो होने लगा. He says and I quote, मैं अपने पूरे जीवन काल में यही सोचता था कि मेरा मन और शरीर यानी मैं हूँ और दुनिया यानी जो बाहर है, लेकिन अचानक मैं जान नहीं पा रहा था कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ. जो सांस मेरे अंदर जा रही थी, जिस पत्थर पर मैं बैठा हुआ था, मेरे आसपास का माहौल, सब कुछ मेरे अंदर समा जा चुका था. जो मैं बन चुका था वो इतना बड़ा था कि वो हर जगह मौजूद था. टर्न्स आउट जग्गी वासुदेव को एनलाइटनमेंट मिल चुकी थी. उस घटना के बाद वही सिमिलर एक्सपीरियंसेस जग्गी वासुदेव के साथ फिर से होने लगी. जग्गी जी को तो पता नहीं था कि एक्सपीरियंसेस जो वे महसूस कर रहे हैं वे क्या है, लेकिन वे कहते हैं कि अब उन्हें परमानंद का सुख मिल रहा था. 7-7 घंटे गुजर जाते थे और उन्हें लगता था 2 ही मिनट गुजरे हैं. अगले 6 हफ्तों में यह अनुभव उनके जीवन की जीवित वास्तविकता बन गई, लिविंग रियलिटी. ये जो परमानंद वे अनुभव कर रहे थे, अब वे वही परमानंद सबको महसूस करवाना चाहते थे. Armed with this experience, I started creating methods and systems through which every human being could access that intelligence and that capability within the system which can make a piece of bread into a human being. उन्होंने ऐसे मेथड्स इजाद किए जिनके माध्यम से वे लोगों को एनलाइट कर सके. उस मेथड का नाम था इनर इंजीनियरिंग. और इस मेथड को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की. जग्गी जी को बचपन से ही भगवान पर विश्वास नहीं था. वे अपने बुक एनकाउंटर द एनलाइटन में लिखते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हो क्योंकि आपके दादाजी ने आपको कहा कि कृष्ण की पूजा करो. ऐसी पूजा गलत है. अगर ऐसा व्यक्ति आपके समाज में रहने आ जाए तो आप उसे फांसी पर लटका दोगे क्योंकि आपकी माँ बहनें उसके साथ रास लीला करना चाहेगी और उधर क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. जग्गी जी ये भी मानते हैं कि दुनिया के सारे शास्त्र, धार्मिक किताबें, शिक्षाएं, फिलोसॉफीज जो लोगों ने कही या इजाद की है वे सब निरर्थक है. All the scriptures, all the teachings, all the philosophies, all the great things that people have spoken about, all of them are worth nothing. He says people go to temples and they hallucinate gods. लेकिन अगर इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? But according to जग्गी वासुदेव, creation nothingness से आई है. When I say Shiva, don't imagine the calendar figure you've always seen. When we say Shiva, what it means, that which is not. So they say Shiva is a cosmic man lying down across the cosmos and he is nothing. He is not physical matter, he is nothing, but he is opaque. And then Shakti came and she danced around, a certain level of energy danced around. When Shakti danced around, he got irritated and he woke up. So he got angry and he roared. When he roared, the yoga says, he spat out galaxies. Then Shakti touched Shiva. When she touched Shiva, she gathered inertia. So she became more stable, which is what the creation is today. And now if you ask me, जग्गी वासुदेव को ये सब कैसे मालूम? Then मैं आपको बता दूं, जब वे चामुंडी हिल्स पर एनलाइट हुए थे तो वे इस नथिंगनेस से जुड़ गए थे. As he said in his books, वे अपनी किताबों में ये भी कहते हैं कि ये उनका चौथा जन्म है. 370 साल पहले वे एक स्नेक चार्मर थे, बिलवा.
फिर वे एक योगी के रूप में जन्मे जिसका नाम था शिव योगी। शिव योगी मोक्ष की तलाश में था और एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहा था, वह एक साधु आया, श्री पल्लनी स्वामी। स्वामी जी ने शिव योगी की एनलाइट होने की ख्वाहिश को पहचाना और उसके माथे पर अपनी छड़ी लगा दी और शिव योगी एनलाइट हो गया। लेकिन इसी के साथ शिव योगी एक ऐसे सपने का हिस्सा बन गया जो पिछले 15,000 सालों से पूरी नहीं हुई थी। Many thousand years ago, there was a yogi whose name was Sunira, and she took on an impossible project. He wants to build a living Shiva once again, a perfect teacher for the world. So he started building the energy body for that kind, and then he believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world with a lifespan of a few hundred or thousand years, so that he will transform the whole world by the time his time is done. सुनीरा ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन वो असफल रहा और मर गया। लेकिन आने वाले कई सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने सुनीरा के इस अधूरे सपने को आगे ले जाना चाहा, लेकिन कोई भी ऐसी एनर्जी बॉडी बनाने में कामयाब नहीं हुआ और कई सदियां गुजर गई। वही सुनीरा के इस प्रोजेक्ट पर कई योगियों ने अनुमान लगाया कि इस एनर्जी बॉडी को इंसानी शरीर में बांधना असंभव है, तो उन योगियों ने ध्यान लिंगा में इस एनर्जी बॉडी को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ क्योंकि भविष्यवाणी लिखित थी। जग्गी वासुदेव के दूसरे जन्म शिव योगी को स्वयं आदि योगी ने एनलाइट किया था। This fabulous crafty man enslaved me for his project. और उन्होंने इस ध्यान लिंगा पर काम करना शुरू किया, लेकिन वे 57 साल की उम्र में चल बसे। जग्गी वासुदेव का फिर एक बार जन्म हुआ एज अ सदगुरु श्री ब्रह्म। श्री ब्रह्म को सुनीरा के सपने के बारे में ऑलरेडी मालूम था और वे ऑलमोस्ट ध्यान लिंगा बनाने में सफल हो ही गए थे, लेकिन ये फुलफिलमेंट फिर से अधूरी रह गई। लेकिन समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने अगले जन्म की योजना बना ली थी कि वे किस औरत की कोख में जन्म लेंगे। इवन जो अन्य 2 लोग उन्हें इस कार्य में मदद करने वाले थे, वे भी किन औरतों की कोख में जन्म लेंगे वे भी जाने से पहले वे नियोजित करके गए थे। और सदगुरु श्री ब्रह्म जी की योजना सही साबित हुई और जग्गी वासुदेव का जन्म हुआ और 2 अन्य लोग जो उन्हें इस कार्य में मदद करने वाले थे, उनका भी नियोजित कोख में जन्म हुआ। एक थी जग्गी वासुदेव की शिष्या जो पिछले जन्म में श्री ब्रह्म जी की शिष्या थी भारती, और दूसरी थी विजय कुमारी एके विज्जी जो स्वयं जग्गी वासुदेव जी की बीवी थी। अब तीनों ने इस 15,000 साल पुराने कठिन कार्यों को अपने हाथों में लिया। तीनों त्रिकोण आकार बना लेते थे जिसका एक ही लक्ष्य था कि तीनों की लाइफ एनर्जी से ध्यान लिंगा की 7 ऊर्जा चक्रों को एक्टिवेट किया जाए और आखिरकार ध्यान लिंगा पवित्र हो जाए। लेकिन नियति ने फिर एक बार इस कार्य में बाधा डाल दी और जब ध्यान लिंगा अभिषेक की 95% प्रक्रिया हो चुकी थी और केवल ही के हफ्ते में ध्यान लिंगा एक्टिवेट हो जाता, विजय यानी जग्गी वासुदेव जी की बीवी की डेथ हो गई जो केवल 31 साल की थी। जग्गी जी ने बताया कि विज्जी ने महासमाधि ले ली है। This is a nation where there have been thousands of incidents where people have left their body consciously. So she announced that she will leave almost 9 months ahead of that time. It was a natural process. ध्यान लिंगा का काम रोकना नामुमकिन था और जग्गी वासुदेव इसे इसी जन्म में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपना और विज्जी का दोनों का रोल एक साथ निभाना शुरू कर दिया, लेकिन इस कारण उनके शरीर पर बहुत भार आने लगा और वे बेहद बीमार गिरने लगे। In about 8 months, maximum of 8 months, I aged about 25 years during the consecration process. Certain period of consecration, about 8 months' time, people just saw me like I am aging, like so extremely fast. I became, from a very vibrant young person, I just became an old person, absolutely, totally weak and shaky in 8 months' time. My hair braid. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 3.5 सालों बाद एंड टू बी एग्जैक्टली 24 जून 1999 को ध्यान लिंगा, जिसमें स्वयं शिवा की एनर्जी है, वो हम सबके लाभ के लिए तैयार हुआ।
15,000 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई। जी हाँ, इस जगत गुरु को बनाने का सपना देखने वाले सुनीरा ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि हजारों सालों बाद एक योगी आएगा जो इस सपने को पूरा करेगा। वे योगी सदगुरु जग्गी वासुदेव थे। लेकिन एक साथ 2 लोगों का कार्य अपने ऊपर लेने के बाद उनके शरीर को अनेक रोगों ने घेर लिया था और वैसे भी उन्होंने ध्यानलिंगा बनने के बाद 42 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ देने का निर्धार भी कर लिया था। In 8 months' time, my hair grayed completely, my whole body changed, everything happened. Everybody knew anyway I'm going to die shortly. They knew because I had told them, I had prepared them for this, I told, this is how much I'm going to live, beyond that it will not be there. लेकिन उनसे प्रेम करने वाले उनके शिष्य इंक्लूडिंग भारती ने सदगुरु के दाहिने पैर में एक तांबे का पायल चढ़ा दिया, एक अलौकिक धागे के साथ, जो मॉडर्न भाषा में कहूँ तो एक वाईफाई की तरह काम करता है, जो एनर्जीज की लेन देन करता है। सदगुरु के शिष्यों की एनर्जीज सदगुरु के शरीर में इस तांबे के पायल के कारण आती है, जिसने उन्हें आज तक जिंदा रखा है। अगर वे ये तांबे का पायल निकाल दे तो वे मर जाएंगे। This is in many ways keeps me alive, physically alive. जग्गी वासुदेव हमेशा से ही सदगुरु थे, बल्कि अपने पिछले के पिछले जन्म शिव योगी के रूप में हुए थे। जब श्री पल्लनी स्वामी जी ने उनके माथे पर छड़ी लगा दी थी, चामुंडी हिल्स पर केवल उन्हें याद आया था कि वे सदगुरु हैं, वे इस व्याप्त नथिंगनेस से जुड़े हुए हैं और वे उसका हिस्सा है। द मोमेंट उनके माथे पर वो छड़ी लगी, वे सर्वज्ञानी बन गए। क्रिएशन से लेकर बिग बैंग थ्योरी, प्लैनेटरी मोशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, द साइंस, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, रिलीजन, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन ऑफ। सदगुरु जग्गी वासुदेव को हर चीज का ज्ञान मिल चुका था। He knows everything. When it comes to life, it doesn't matter what you say, what you think, what you do. What I say will happen when it comes to life, fundamental life. So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. This sounds absolutely egoistic, stupid, Mike Tyson-like. But what can I do? It's true. But wait. There is a problem. हाँ? जग्गी जी ने तो कहा था उनके वाइफ विज्जी ने महासमाधि ले ली थी, लेकिन विज्जी के पिता के अनुसार तो विज्जी का मर्डर हुआ था और वो मर्डर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किया था। हाँ। जग्गी जी के अनुसार 31 साल की विजय कुमारी ने 23 जनवरी 1997 को महासमाधि ले ली, लेकिन जग्गी वासुदेव के खुद के ससुर ने यानी विज्जी के पिता ने जग्गी वासुदेव पर उनके बेटी के मर्डर का इल्जाम लगाया और एफआईआर फाइल कर दी। ये खबर उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने छापी थी, जिसके अनुसार ईशा आश्रम के योगी जग्गी वासुदेव और उनकी बीवी विजय कुमारी उर्फ विज्जी के मर्डर के मामले में चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस को दिए गए कंप्लेंट में विज्जी के पिता टीएस गंगना जी को लगता है उनकी बेटी की मौत में कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट टाइम उनकी बेटी उन्हें 15 जून 1996 को मिली थी और 23 जनवरी 1997 को उन्हें जग्गी वासुदेव द्वारा मैसेज मिला कि उनकी बेटी मर चुकी है और गंगना जी के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जग्गी वासुदेव ने विज्जी के लाश को जल्दबाजी में जला दिया 24 की सुबह गंगना जी के आने से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कम्युनिटी में लाश को जलाने की प्रथा है ही नहीं। जग्गी ने जानबूझकर लाश को जला दिया ताकि सारे सबूत मिट जाए। गंगना मानते हैं कि जग्गी ने अपनी बीवी का मर्डर किया है क्योंकि उनका आश्रम के किसी शिष्य के साथ अफेयर था। गंगना जी के कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस आश्रम पहुंची तो गॉडमैन जग्गी यूएस से चले गए थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। तो पुलिस ने लैक ऑफ एविडेंस के कारण केस को बंद कर दिया और एक फाइनल रिपोर्ट बनाई। लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने विज्जी के पिता टीएस गंगना जी द्वारा बताई गई बातों पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जैसे उन्होंने कहा था जग्गी वासुदेव का आश्रम के किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन किसी से भी पूछताछ नहीं की गई। इवन जो लोग वहां समाधि एवं अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई। बट थिंक अबाउट इट, आप इन सारी बातों के बारे में
लॉजिकली सोचो, क्यों जग्गी वासुदेव ने विज्जी के पिता और उसके 2 बहनों के आने का इंतजार नहीं किया, जबकि उन्होंने जग्गी जी से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि उनके आने तक विज्जी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। विज्जी के पिता के अनुसार उनकी कम्युनिटी में लाश को दफनाया जाता है, पर जग्गी जी ने लाश को जलाया। और ये तो सबको पता है कि समाधि लिए हुए व्यक्ति को गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। फिर बॉडी को जलाया क्यों गया और अंतिम संस्कार सुबह 4 से 5 बजे के बीच में क्यों की गई थी? इतनी क्या जल्दी थी? और जब उन्होंने साफ कहा अपनी किताब में कि विज्जी की समाधि के बाद उन्हें 2 लोगों की एनर्जी खुद क्रिएट करनी पड़ी थी और इसी कारण वे भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे। उन्हें तो बोलना तक नहीं आता था, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करने आती है वे तभी यूएस से लेक्चर देने कैसे चले जाते हैं। जग्गी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि विज्जी यानी उनकी बीवी ने उन्हें समाधि के 9 महीने पहले ही समाधि लेने की इच्छा जाहिर की थी। फिर विज्जी ने 1 महीने पहले ही कैसे समाधि ले ली? वो 1 हफ्ता रुक भी सकती थी, क्योंकि ध्यान लिंगा बनने में 1 हफ्ता ही बचा था। और विज्जी अगर समाधि लेने वाली थी तो उसने अपने माँ बाप बहनों को क्यों नहीं बताया था कि वो समाधि लेने वाली है, जबकि वो उन्हें मिलने भी गई थी। जग्गी वासुदेव अपने बुक मिस्टिक्स म्यूजिक में खुद लिखते हैं कि विज्जी अकम्प्लिश्ड यानी कुशल योगी नहीं थी, मतलब उन्होंने कभी पतंजलि योगा सूत्र भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो मोक्ष पाने के लिए महान साधु 50-50 साल साधना मेडिटेट करते हैं, वो एक साधारण बैंक एम्प्लॉय कैसे पा लेती है? जग्गी वासुदेव इवन ये भी कहते कि विज्जी ने जग्गी को कभी अपना गुरु माना ही नहीं और ना ही उन्हें जग्गी की ये लाइफस्टाइल पसंद थी। वो तो ध्यान लिंगा का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। विज्जी को इवन जग्गी जी और भारती की बढ़ते हुए नजदीकी से दिक्कत भी थी। अब जो औरत एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जिसके अपने पति के अन्य शिष्यों से बढ़ रहे नजदीकियों से दिक्कत हो रही थी, जिसकी बेटी केवल 7 साल की थी, वो समाधि क्यों लेगी वाला? These are just doubts I had in Sadhguru's story of Vijji's death. हम उन पर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहे, वो हमारा काम है ही नहीं। उन्हीं की किताब में लिखा गया है कि ध्यानलिंगा अभिषेक की प्रक्रिया विज्जी की उपस्थिति में खत्म हो जाती, लेकिन जग्गी जी की शिष्या भारती को अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन में जाना था। कितनी मूर्खता वाली बात है ये। क्या भारती को मालूम नहीं था कि ये ध्यानलिंगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि ये 15,000 साल पुरानी प्रोफेसी है? कई योगी इसमें असफल हो गए। जग्गी वासुदेव को 4 जन्म लेने पड़े। खुद भारती का ये दूसरा जन्म था। उसका जन्म ही ये कार्य पूरा करने के लिए हुआ था और वो अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में चली गई थी। रियली आई वंडर, 15,000 साल पुरानी प्रोफेसी, जग्गी जी के 4 जन्म, और उनके पास ऑप्शन था कि वे स्पेशल लोगों को स्पेशल कोक में पैदा कर सकते हैं। देन उन्होंने 2 मामूली लड़कियों को क्यों चुना इतने बड़े कार्य के लिए? इतने बड़े कार्य के लिए तो किसी अकम्प्लिश्ड योगी को चुनना चाहिए था। ये सारी कहानियां, ये सारे फैक्ट्स किसी दंत कथा जैसी नहीं लगती जो किसी 6 साल के बच्चे ने लिखी हो। जग्गी जी ने खुद कहा है कि ध्यानलिंगा के अभिषेक प्रक्रिया के बाद वे बीमार गिर गए थे और उन्होंने अपने एंकल बोन को खुद अपनी शक्तियों से ठीक किया था। इवन अपना अस्थमा भी 1 घंटे में ठीक कर दिया था। In a field hockey game, I fractured my left ankle. I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic, and I had a very severe bout of asthma. I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. लेकिन इस इंटरव्यू में वे ये कहते हैं, So 3 years ago, it so happened, I was playing soccer with the kids and I tore my left knee. Then the only damn game I can play is golf. सो साक्षात भगवान अपनी नी बोन ठीक नहीं कर पा रहा और दुनिया भर में अस्थमा के आज 262 मिलियन पेशेंट्स है। अगर जग्गी जी के पास इसका इलाज है तो वे इलाज सबको दे क्यों नहीं रहे, राइट? अगर जग्गी वासुदेव ने पहले ही प्लान किया था कि ध्यानलिंगा अभिषेक के बाद वे 42 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ देंगे, तो उन्होंने शादी क्यों की थी और अपने बेटी को जन्म ही क्यों दिया था, जबकि उन्हें पता था कि उनके मरने के बाद उनकी बीवी विधवा हो जाएगी और उनकी बेटी अनाथ। लेकिन वे अपनी शादी को भी जस्टिफाई करते हैं, कहते हुए कि ऋग्वेदा में लिखा गया है कि ध्यानलिंगा का अभिषेक एक ऐसा ही योगी करेगा जो गृहस्थ योगी हो, यानी शादीशुदा योगी हो। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने दोस्त के दादाजी से बात की जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के ज्ञानी है, और उन्होंने मुझे कहा ऐसी कोई भी चीज ऋग्वेदा में नहीं लिखी गई है और ना ही ध्यानलिंगा टर्म का कोई जिक्र है। उन्होंने मुझे बताया कि सुनीरा नाम की योगी का न योगिक कल्चर में, न धर्म ग्रंथों में, न उपनिषदों में और ना ही वेदों में कोई जिक्र है। और सबसे मजे की बात तो यह है, जिन वेदों में जग्गी जी ध्यानलिंगा का होने का जिक्र करते हैं ना, वे हिंदू वेद पुरानी केवल 5000 साल पुराने हैं और जग्गी जी की कहानी 15,000 साल पुरानी है। ओके, फॉर अ मोमेंट लेट्स बिलीव जग्गी जी की यह ध्यानलिंगा वाली कहानी सच है।
सो अकॉर्डिंग टू दैट ध्यानलिंगा साक्षात लिविंग शिवा है, वही शिवा जो इस नथिंगनेस में समाये हुए है, जिनके अंदर से ये दुनिया क्रिएट हुई है। ही इज अ क्रिएटर। लेकिन जग्गी जी ये भी कहते हैं कि अब उस ध्यानलिंगा में और उनमें कोई फर्क नहीं बचा है। सो इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C, right? मतलब अब जग्गी वासुदेव इस दुनिया के क्रिएटर बन चुके हैं। Where is the logic? And do you believe this shit? ये सारी कहानियां, ये सारे फैक्ट्स मुझे एक ही संशय की ओर ले गई कि जग्गी वासुदेव जी का, सदगुरु जी का एनलाइटनमेंट सच है भी कि नहीं। और जब मैंने उनका इतिहास खंगाला तो मुझे सब समझ गया। जग्गी जी की वो कहानी याद है जब वे पिछले जन्म में शिव योगी थे। उनके गुरु श्री पल्लनी स्वामी जी ने उनके माथे पर छड़ी लगा दी थी और वे एनलाइट हो गए थे। बस इस कहानी में एक ही झूठ है, वो गुरु श्री पल्लनी स्वामी जी नहीं बल्कि भगवान श्री रजनीश जी थे, ओशो। सो 70 के दशक में अमेरिका में गरीबी, वॉर, रेशियल भेदभाव के कारण लोगों का ट्रेडिशनल रिलीजन्स पर से विश्वास उठ चुका था और तब अनेक स्पिरिचुअल लीडर्स ने इन वल्नरेबल लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रीच करना शुरू कर दिया। इन सारे स्पिरिचुअल गुरुज में दो चीजें बड़ी कॉमन थी। पहली कि ये सब दावा करते थे कि ये सब एनलाइटेंड बीइंग्स है, और दूसरी इन सभी गुरुओं ने अपने अपने ट्रस्ट खोले और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। एक स्पिरिचुअल गुरु ने तो अमेरिका में अपना शहर ही बना लिया। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. It is a political victory for followers of the Indian guru, Bhagwan Sri Rajneesh. Change has been coming, and today, Antelope awoke to a red dawn. ओशो की ख्याति पूरे दुनिया में फैल गई थी और ओशो के इस ट्रैक रिकॉर्ड के नोट्स इंडिया में बैठा एक व्यक्ति ले रहा था, जग्गी वासुदेव। और उसे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊं। इट इज इजी एंड इट कैन मेक यू रिच। जग्गी वासुदेव प्रिविलेज्ड फैमिली से आते थे और उनका पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी था। जग्गी जी अनेक बार दावा कर चुके हैं कि उन्हें 12 साल की उम्र से योगा और मेडिटेशन की नॉलेज थी और उनका आज मेन प्रोडक्ट भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, विच इज इनर इंजीनियरिंग और ईशा योगा। लेकिन सच तो यह है कि जग्गी जी 1984 में ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखने गए थे। न्यूज लॉन्ड्री को आंध्र प्रदेश बेस्ड एक योगा टीचर ने बताया कि जग्गी वासुदेव और वे गोमतागिरी मैसूर में ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखते थे और जग्गी ने ऋषि प्रभाकर को 1984 में ज्वाइन किया था, जहां वो अपने बीवी से भी मिले थे। उनका इसके पहले योगा से कोई भी नाता नहीं था। ऋषि प्रभाकर ने जग्गी जी को कोयम्बतूर में अपना सेंटर खोलने के लिए भेजा था, लेकिन जग्गी जी ने सिद्ध समाधि योगा को रीपैकेज करके उसका नाम ईशा योगा रख दिया और अपना खुद का सेंटर खोल लिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यू वुड थिंक इतना काफी है उनकी फर्जीगिरी साबित करने के लिए, बट हमारे पास और भी सबूत है। बट लेट मी टेल यू, इन स्पिरिचुअल गुरुज का मेन प्रोडक्ट योगा या मेडिटेशन नहीं होता, बल्कि एनलाइटनमेंट होती है। ये लोगों को एनलाइटनमेंट भेजते हैं। जग्गी ये बखूबी जानते थे और उन्होंने भी अपनी एनलाइटनमेंट की, अपनी सर्वज्ञानी होने की स्टोरी बनाई। लेकिन जग्गी वासुदेव ओशो की पूरी नकल कर ली, और नकल कितनी भी अलग हो समझ तो आ ही जाती है। लाइक जग्गी जी दावा करते हैं कि उन्होंने कोई वेदास या स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े और ना ही कोई फिलोसॉफी। I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutras. Because उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली नहीं पढ़ी, उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स ओशो की किताबों के माध्यम से पढ़ी है। मोस्टली वो जो कहते हैं वो अधिकांश ओशो की कोट्स, ओपिनियंस, एनेक्डोट्स के रिपीटेशंस होते हैं, इवन चॉइसेस ऑफ वर्ड्स। You clearly disturb people who see those sort of statements as profound. I love to disturb people. A guru is somebody who disturbs the fundamental aspects in you. I'm not going to console anybody. He is not a solace peddler. Because the more you console them, the more retarded they remain. All kinds of conclusions that you have drawn. Disturb them.
he disturbs everything in you. That challenge will bring the capacities to the climax. He's somebody who is there to assist you towards your liberation. जगी जगी एनलाइटनमेंट नथिंगनेस यानी शून्यता तक जाती है। शिवा कोई बीइंग नहीं है, बल्कि इस नथिंगनेस में समाये हुए है, और इस नथिंगनेस में मिल जाना ही एनलाइटनमेंट है। और उसके वे 112 तकनीक बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट विज्ञान भैरव तंत्र से आती है, और इस तंत्र को उस वक्त ओशो ने ही प्रचलित किया था। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और फंस गया। Be liver. क्या खेला? Roblox. You're too slow. 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 You're too slow.
What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? What the
too slow. You're 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 too slow. Bye-bye. I'm Luigi, number one. You're too slow. You're too slow. Oh, mass. Wubba lubba dub dub! Wubba lubba dub dub!
I'm Pickle Rick! I'm Pickle Rick! Wubba lubba dub dub! I'm Pickle Rick!
You are all weak. You are all bleeders. You are all weak. You are all bleeders. Putas.
say,
No fiddlesticks. What now? What now? No fiddlesticks. What now? No fiddlesticks. What now? No fiddlesticks. What now? No fiddlesticks. What now? Yeah.